अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। भारत म्यांमार देशयोः सीमायाम् असम राइफल्स् इत्यस्य आरक्षिबलस्य कार्याचरणम्। चन्देल जनपदस्य न्यू समतल ग्रामं निकषा मारिताः 10 उग्रवादिनः। प्रभूतसंख्यायां शस्त्राणि अथ विस्फोटकानि आरक्षिबलेन अवाप्तानि। पाकिस्तान प्रशासनस्य संज्ञाने कराची नगरे आतंकवादीनाम् एकत्रीकरणम्। प्रचारयात्रायां दृष्टिं गताः लश्कर इति गुल्मस्य आतंकिनः अथ अहले सुन्नत वल जमात इत्यं समर्थकाः। वक्फ संशोधन विधिम् आलक्ष्य प्रविष्टासु समाह्वान याचिकासु अद्य शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। वक्फ बोर्ड इत्येतस्मिन् इस्लाम मतेतर जनान् सम्मेलितुम् अथ जनपदाधिकारिणे अधिकार प्रदातुं सर्वाधिकी अस्ति आपत्तिः। अथ कान इत्याख्ये चलच्चित्रोत्सवे भारत पवेलियन इत्यस्य केन्द्रस्य शुभारम्भः। 56तमस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रोत्सवस्य प्रचारफलकं प्रचारचलच्चित्रं च प्रकाशिते। अन्ते तावत् बिहार राज्ये प्रवर्तमानायाः खेलो इंडिया यूथ गेम्स इति प्रतियोगितायाः समापनम् अद्य। पदकतालिकायां महाराष्ट्रं शीर्षत्वं भजते, हरियाणा राज्यं तावत् द्वितीयक्रमे। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। भारत म्यांमार देशयोः सीमायाम् असम राइफल्स् इत्यनेन आरक्षिबलेन कठोरं कार्याचरणं कृतम्। चन्देल जनपदस्य न्यू समतल इत्याख्यं ग्रामं निकषा 10 उग्रवादिनः असम राइफल्स् इत्यनेन आरक्षिबलेन मारिताः सन्ति। प्रभूतसंख्यायां तत्र शस्त्राणि, अस्त्राणि किञ्च विस्फोटकानि अवाप्तानि सन्ति। विलम्बरात्रिं यावत् अभियानम् एतत् प्रावर्तत। आतंकवाद प्रकरणे पाकिस्तानदेशे परिवर्तनं नैव दृश्यते। एतस्य प्रमाणं कराची नगरे दृष्टिं गतम्, यत्र पाकिस्तान प्रशासनसमक्षं समाचरिते एकस्मिन् प्रचारयात्राक्रमे लश्करे तैयबा अथ अहले सुन्नत वल जमात इत्येतस्य आतंकि संघटनद्वयस्य सम्बद्धाः जनाः अवलोकितं गताः। एतस्यां प्रचारयात्रायां हाफिज सईद इत्येतस्य परिवारजनः प्रचारयात्रां सम्बोधितवान्। इतः पूर्वम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियाने व्यापादितानाम् आतंकिनाम् अन्तिमसंस्कारे पाकिस्तान देशस्य अनेके शीर्षसैन्याधिकारिणः राजनेतारः च सम्मिलिताः अभवन्, येन जगता पाकिस्तानेन समम् आतंकिसम्बन्धाः अवलोकिताः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य माओवाद प्रभाविते बस्तर इत्येतस्मिन् क्षेत्रे सुरक्षाबलानां भटाः अभियानान्तर्गतं महतीं सफलताम् आप्नुवन्ति। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्ययोः सीमायां कर्रेगुट्टा पर्वतेषु 21 दिनानि यावत् प्रवर्तिते अभियाने 31 नक्सलवादिनः सैन्यबलेन मारिताः अथ तस्मिन् क्षेत्रे पूर्णतया सुरक्षाबलैः अधिकारः कृतः। अवधेयं यत् एतस्मिन् विशिष्टाभियाने तादृशाः नक्सलवादिनः मारितं गताः, येषु कोट्यधिकरूप्यकाणां पुरस्कारराशिः प्रशासनेन उद्घुष्टा आसीत्। वस्तुतः एतस्मिन् क्षेत्रे सुरक्षाबलानाम् अधिकारः महत्वपूर्णः रणनीतिपरः जयत्वेन आलक्ष्यमानः अस्ति। केन्द्रप्रशासनं नक्सलवादं विरुध्य व्यापकम् अभियानं निरन्तरं सञ्चालयति। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमावर्तिषु कुर्रगुट्टालु पर्वतेषु नक्सलवादं विरुध्य प्राप्तसफलतायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सुरक्षाबलानि शुभकामनावचोभिः वर्धितवान्। प्रधानमन्त्री एक्स इत्येतस्मिन् जनसञ्चारमाध्यमे लिखितवान् यत् सुरक्षाबलानाम् एषा सफलता विज्ञापयति यत् नक्सलवादं समूलं नाशयितुं प्रवर्तमानम् अस्माकम् अभियानं सम्यक् दिशि अग्रेसरम् अस्ति। नक्सलवाद प्रभावितेषु क्षेत्रेषु शान्तिस्थापनया सह तानि क्षेत्राणि विकासस्य मुख्यधारया संयोजनार्थं वयं सर्वथा प्रतिबद्धाः स्मः।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां गतदिने केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनं समाचरितं, यत्र अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः गृहीताः। सूचना-प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये सूचयन् कथितवान् यत् उत्तरप्रदेशस्य जेवर इत्यत्र सेमीकण्डक्टर यूनिट इत्येतस्य एकांशस्य निर्माणं करिष्यते। अत्र निर्माणकार्ये आहत्य 6,700,300,कोटिमुद्रायाः निवेशः भविष्यति। अत्र एकांशे प्रतिमासं 6,00,000,000 चिप् इत्येतेषां निर्माणं भविष्यति। एतेन उपक्रमेण प्रायः 2,000 जनाः वृत्त्यवसरं प्राप्स्यन्ति। ध्येयं यत् इतः पूर्वम् एतादृशानाम् एव 5 सेमीकण्डक्टर यूनिट इत्येतेषाम् एकांशानां निर्माणाय घोषणा सञ्जाता आसीत्। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली जो मेमोरी वाला प्लांट है उससे, और ये डिस्प्ले ड्राइवर वाला प्लांट है इससे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। और जो आसाम में प्लांट है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा आसाम वाले प्लांट से। और जो साणंद में 2 दूसरे प्लांट्स हैं उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इससे बहुत सारी जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए जो चिप्स चाहिए वो चिप्स सारी की सारी करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में इन प्लांट्स से मिलेगी और एक्सपोर्ट भी इनसे होगा। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने सकलसेनानायकं समेत्य सेनात्रयस्य प्रमुखान् मिलितवती। अत्रान्तरे सकलसेनाप्रमुखः जनरल अनिल चौहानः, स्थलसेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्रः द्विवेदी, वायुसेनाप्रमुखः एयर चीफ मार्शल AP सिंहः अथ नौसेनाप्रमुखः एडमिरल दिनेशः के त्रिपाठी इत्येते राष्ट्रपतिवर्याम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य अभियानस्य सफलताविषये सूचितवन्तः। तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः आतङ्कवादस्य विरोधे भारतस्य सफलं कार्याचरणं, सशस्त्रबलानां वीरतां, समर्पणं च प्रशंसितवती। न्यायमूर्तिः भूषण रामकृष्ण गवई इत्येषः गतदिने देशस्य 52तम मुख्यन्यायाधीशत्वेन शपथं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते एकस्मिन् विशेषसमारोहे तं पदगोपनीयतायै प्रतिज्ञापितवती। ध्येयं यत् न्यायमूर्तिः गवई इत्येषः न्यायमूर्तेः संजीव खन्ना इत्येतस्य स्थानं गृहीतवान्। न्यायमूर्तेः गवई इत्येतस्य कार्यकालः नवंबर मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। महाराष्ट्रस्य अमरावती इत्यत्र जन्मलब्धा न्यायमूर्तिः गवई इत्येषः 1969-2000 वर्षे मे मासस्य 24 दिनाङ्के उच्चतमन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन नियुक्तः आसीत्। प्रवर्तमानवर्षे वक्फ संशोधनविधिः अनुमतः आसीत्। विधिम् आलक्ष्य काश्चन समाह्वानयाचिकाः शीर्षन्यायालये प्रविष्टाः आसन्। तासु प्रविष्टासु समाह्वानयाचिकासु अद्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। वस्तुतः वक्फ बोर्ड इत्येतस्मिन् इस्लाम मतेतर जनानां सम्मेलनेन अथ जनपदाधिकारिणे अधिकारप्रदानेन केचन आपत्तिं कृतवन्तः इति। पहलगाम आतङ्क्याक्रमणानन्तरं पाकिस्तानं विरुध्य प्रचालितस्य सिन्दूराभियानस्य सफलतायै अथ सेनायाः साहसबलिदानादीनां सम्मानार्थं त्रिवार्णिकी यात्रा देशे समारब्धा अस्ति। एतस्मिन् क्रमे मिजोरम राज्यस्य राजधान्यां आइजोल इत्यत्र त्रिवार्णिकी यात्रा समायोजितं गता। त्रिवार्णिकी यात्रायां भाजपादलस्य कार्यकर्तॄन्, पदाधिकारिणः समेत्य पूर्वसैनिकाः, सैन्यकर्मिणां परिवाराः, स्थानीयाः नागरिकाः सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। कान्स चलच्चित्रमहोत्सवे भारत पवेलियन इत्यस्य केन्द्रविशेषस्य शुभारम्भः अभवत्। सूचना प्रसारण मन्त्रालय पक्षता भारत पवेलियन इत्यस्य आयोजनं कृतं गतम्। अत्रावसरे चलच्चित्रकारः शेखर कपूरः, अनुपम खेरः अथ अन्ये च वरिष्ठाः कलाकाराः उपस्थिताः अभवन्। अत्रावसरे 56तमस्य अन्ताराष्ट्रियचलच्चित्रोत्सवस्य प्रचारफलकम् अथ प्रचारचलच्चित्रं च प्रकाशिते।
मध्यप्रदेशस्य ओंकारेश्वरे नर्मदानद्याः पवित्रे तटे अद्वैतविचारसम्प्रसारकस्य जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य प्रकटोत्सवः वैदिकानुष्ठानपुरस्सरं समाचरितः। मध्यप्रदेशस्य संस्कृतिविभागस्य अन्तर्गतं मान्धातापर्वते स्थापितेन सांस्कृतिकैकतान्यासद्वारा आयोजिते पञ्चदिनात्मके एकात्मपर्वणि एतस्मिन् विदुषां सान्निध्ये संवादसत्राणि, वेदान्तसत्राणि, सुमधुरस्तोत्रगायनं, सांस्कृतिकाः ज्ञानवर्धकाः च विविधाः कार्यक्रमाः आयोजितं गताः। अत्र कार्यक्रमे महामण्डलेश्वरः स्वामी विवेकानन्दपुरीवर्यः, माता पूर्णप्रज्ञा, स्वामी वेदतत्त्वानन्दपुरीवर्यः, स्वामी योगप्रतापसरस्वतीः, स्वामिनी सद्विद्यानन्दसरस्वती, इस्कॉन संस्थायाः आध्यात्मिकगुरुः गौराङ्गदासप्रभुः, स्वामी शैलेन्द्रसरस्वतीत्यादयः अनेके साधुसत्पुरुषाः, विचारकाः, युवानः, श्रद्धालवः च उपस्थिताः अभवन्। The Bhagavad describes अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमूर्तय। जब हम अपने विश्वविद्यालयों से स्किल सीखें और ऐसे सत्संग में आकर शास्त्रों का अध्ययन करके उचित विल को धारण करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड विल मेक द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया विच विल टेक इंडिया एंड भारत टू बी द विश्वगुरु। जूना पीठाधीश्वरस्य आचार्य महामण्डलेश्वरस्य स्वामी अवधेशानन्दगिरिवर्यस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य एकात्मपर्वणः अन्तिमे दिने मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉक्टर मोहन यादवः साधुसत्पुरुषैः समम् एकात्मधाम इत्याख्यं पुस्तकं विमोचितवान्। कार्यक्रमं च असौ सम्बोधितवान्। शंकराचार्य ने दंडी स्वामी के रूप में भी शक्ति की जो आराधना की है, आज के इस काल में इसकी आवश्यकता भी है कि हाँ, हमारे शास्त्रों की, ज्ञान की, वैराग्य की, अध्यात्म की सभी विधाओं की आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं देखते हैं तो शंकराचार्य जी के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। तावत् एकात्मपर्वणः अन्तिमे दिने प्रातः 6:00 नर्मदानद्याः तटे जूनापीठाधीश्वरस्य स्वामी अवधेशानन्दगिरिवर्यस्य उपस्थितौ देशविदेशतः समागतानां प्रायः 500 यूनां शङ्करदूतत्वेन दीक्षासंस्कारः सम्पन्नः। एतेषु IIT, IIM, MBBS इत्यादि विषयस्य छात्राः, सैनिकाः, राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियक्रीडकाः, कलाकाराः, शोधार्थिनः च सम्मिलिताः अभवन्। भगवान शंकराचार्य का युग आरंभ हो गया है, उनका अद्वैत का, वननेस का, एकात्मता का, और यही पूरे विश्व को शांति देगा। हमें केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को। और ध्यान रहे, भारत की ये संस्कृति बची रही तो विश्व भी बचा रहेगा। पतंजलि के अनुसार कि शोक रहित समाज हम पैदा करें, हम वैसा समाज पैदा करें जो दृष्टा हो। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।